साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, एक तरह से देश के युवाओं से निकलकर आज युवाओं की बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबसे बड़ी आबादी, सबसे ज़्यादा युवा भारत के पास। ऐसे में युवाओं के बीच जिस तरह से क्रेज बढ़ रहा है योग को लेकर, जैसे मैंने कहा कि करियर का ऑप्शन तो चुन ही रहे हैं, जो अलग अलग करियर में भी इस समय कहीं ना कहीं मौजूद हैं युवा, वो भी अपने सेहत को लेकर, ओवरऑल वेलनेस को लेकर योग की तरफ कहीं ना कहीं आकर्षित हो रहे हैं। और यही अपने आप में धीरे धीरे दुनिया को भी जाता संदेश मिल रहा है। और आज एक तस्वीर जो यूएन मुख्यालय से निकलती दिख रही है, तमाम जो देश हैं दुनिया भर के, वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। आधुनिक दौर में इस संदेश को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे जब योगा मना रहे हैं, योग दिवस मना रहे हैं, तो निश्चित तौर पे यह एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य में पौराणिक जो हमारे ज्ञान है, जो जिसको कहते हैं कि एंशिएंट जो ट्रेडिशन है, हमारा पौराणिक जो परंपरा है, उस परंपरा को जोड़ के ही चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पे जिस समय योग हमारे देश में मनाया जाता था, उस समय की पूरी स्थिति बिल्कुल अलग थी। आज देश में शहरीकरण बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है, और ऐसे शहरीकरण में जहाँ की जिसे कहते हैं कि रैट रेस, मतलब एक प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है लोगों के बीच में, नौकरी की प्रतिस्पर्धा, आगे बढ़ने की प्रतिस्पर्धा, उसके बाद अपने आप को स्थापित करने की, साबित करने की प्रतिस्पर्धा। इन सारे प्रतिस्पर्धाओं में एक तरह की आक्रामकता भी रहती है, और ये आक्रामकता जो है वो नेगेटिव दिशा में न जाए, सकारात्मक दिशा में रहे, एक स्वस्थ प्रतियोगिता में रहे। इसके लिए योग को माना जा रहा है कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक टूल है। इस टूल के माध्यम से आप अपने अंदर के एम्बिशंस को भी आप क्रिएटिव बना सकते हैं, और किसी चीज को नष्ट करने की दिशा में आप आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए माना जाता है कि योग जो है वो आपको अंदर झांकने की ताकत देता है। क्योंकि मान लीजिए आप आधे घंटा एक जगह बैठ के, एक खास जगह पे बैठ के जगह पूरी प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें कि सांस लेने से लेकर अन्य तरह के आसन होते हैं, तो निश्चित तौर पे आप अपने अंदर भी झांकते हैं और अपने बाहर की चीज़ों के बारे में भी सोचते हैं। तो ऐसे में योग आपको प्रकृति के साथ, समाज के साथ, देश की वास्तविक परिस्थितियों के साथ और अपने आप को उसके अंदर तैयार करने की ताकत देता है। और इसीलिए खास करके युवा समाज में इस धैर्य को स्थापित करना काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बहुत सारे युवाओं में जिस तरीके से एक एक्सरसाइज करने के बारे में एक बड़ी प्रवृत्ति, और उसके बाद अब योग करने के बारे में बढ़ रही है, तो दोनों का जो सांगोपांग है, चाहे वो एक्सरसाइज हो या योग हो या अन्य तरह के जो जिस तरीके से खेल कूद में भाग लेना हो, और उसके साथ साथ पढ़ाई हो, उसके बाद प्रतियोगिता, उसके बाद काम करने, जो ऑफिसों में काम करने की बात है, सारी चीज़ों को मिला के यह युवाओं को एक नई ताकत दे रहा है और नई ताकत देगा। रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है, क्योंकि कई बार होता है क्या कि युवा जो ये दौर है, ये दौर काफ़ी तरीके से अपने कैरियर को बनाने का दौर होता है। काफ़ी व्यवस्था होती है, चाहे कि पढ़ने की व्यवस्था हो या उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने की व्यवस्था हो। इन सारे व्यवस्थाओं के बीच में अपने लिए अगर वो पीस ऑफ माइंड के लिए अगर आधे घंटे निकाल लेते हैं, और बहुत सारे जो युवा हैं वो निकालते हैं, और इससे वो बताते हैं कि उनको पढ़ाई में भी केंद्रित करने में, अपने ध्यान को केंद्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है, और उसके अंदर जो एक भय का माहौल होता है, वो भय का माहौल भी दूर होता है। तो निश्चित तौर पे युवाओं के अंदर इसको किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित किया जाए, प्रसारित किया जाए, ताकि जो दुनिया में आप देख रहे हैं कि टकराव की स्थिति बन रही है, चाहे दो देशों के बीच में टकराव हो या दो समाजों के बीच में टकराव हो, उस टकराव के बीच में जनता के अंदर अगर शांति की बात रहेगी तो उसका असर नेतृत्व पर पड़ता है, उसका असर जो है अधिकारी वर्ग है भी पड़ता है। तो जनता की डिमांड ये होगी शांति स्थापित करने की, जनता की डिमांड होगी वसुधैव कुटुंबकम को स्थापित करने की, और जनता की डिमांड होगी कि रंग या मूल के आधार पे जो डिफरेंस नहीं हो। इसके लिए योग बहुत ही बड़ा टूल है, और मुझे लगता है कि चाहे वो युवा वर्ग हो या जो मध्यम उम्र के लोग हों या जो बड़ी उम्र के लोग हैं, इन सारे लोगों में यह रियलाइजेशन धीरे धीरे हो रहा है। प्रीति, बिल्कुल। और आज का जो दिन है उस मामले में एक बहुत बड़ा संकेत और संदेश होगा भारत का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय के सामने। बिल्कुल। और क्या संदेश होगा, बस कुछ ही पल बचे हैं, क्योंकि यूएन मुख्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सीधी तस्वीरें इस समय टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए 180 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि यूएन मुख्यालय में इस समय मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप न्यूयॉर्क में यूएन मुख्यालय से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं, जो आज मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे हैं। और क्या संदेश यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया को देते नजर आएंगे, इस पर सभी की नजरें रहेंगी।
आप इन तस्वीरों को कैसे डिस्क्राइब करेंगे ताल सर, और जो संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जाएगा, क्या उम्मीद है? देखिए, इतना जमावड़ा है वहाँ पे, अभी तो सुबह ही हुई है वहाँ पर, मेरे ख्याल से 8 बजे होंगे शायद। तो वो दिखाता है कि कितना उत्साह है और लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं, और प्रधानमंत्री का भारत का कितना सम्मान है कि सब देशों के जो प्रतिनिधि हैं न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशंस में, वो यहाँ पर आए हैं और प्रधानमंत्री को सुनेंगे। और प्रधानमंत्री जब भी बोलते हैं तो एक बहुत गंभीरता से वो बोलते हैं और हमेशा कोई नई बात कहते हैं, और जिसका बहुत प्रभाव पड़ता है जो भी लोग सुनते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज प्रधानमंत्री का बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के मेंबर्स के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आज वहाँ से आएगा। Happy International Day of Yoga 2023. This is the time that we've all been waiting for. The time has come for me to share how much we're deeply honored. We are so privileged to have with us today none other than the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, a distinguished world leader and an ardent yoga practitioner. I'd like to remind everyone that it is Prime Minister Modi ji himself back in December 2014 who introduced the idea of establishing World Yoga Day to the UN General Assembly. A record number of 175 member states recognized yoga's universal appeal and adopted the landmark resolution proclaiming June 21 as International Yoga Day, the day of the summer solstice here in the north. So every 21 of June is World Yoga Day. This day provides people everywhere across the globe, all of us and everyone watching, an opportunity to reflect upon the countless benefits of practicing yoga. Indeed, an invaluable gift in the world from India's ancient tradition. We thank the Honorable Prime Minister of India for this notable initiative, which is now celebrated worldwide with enthusiasm and vigor. I will now begin the official part of today's event by requesting Ambassador Ruchira Kamboj, India's permanent representative to the United Nations, to the stage to deliver her opening remarks. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Mr. President of the General Assembly, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, distinguished ambassadors, distinguished guests, and all my dear friends and colleagues from this wonderful audience. Today's celebration is indeed very, very special. Prime Minister Narendra Modi will lead us in doing yoga here at the United Nations lawns. To put matters in perspective, it was under his leadership and under his guidance that 21st June was declared as International Yoga Day, and it is only fitting, therefore, that the inspiration behind the idea is with us today in this scenic, multicultural setting of the United Nations. Ladies and gentlemen, it is truly beautiful to see so many around the world gather in solidarity for yoga. It is not living with the burden of weight or the lightness of oblivion. It is a choice made with balance, an idiosyncratic beauty, timeless throughout the progress of humanity. Yoga has endured. It is truth beyond articulation, wisdom beyond time.
I hope all of you will cherish 21st June this year and hold it close to your hearts, today and forever. Thank you. Thank you, Ambassador Cambodge, for your remarks. It's my turn now to invite the Honorable President of the UN General Assembly, Mr. Chaba Karoshi, for the stage. Honorable Prime Minister, Madam Deputy Secretary General, Mr. Mayor, Madam Ambassador, dear friends, Namaste. Yoga is a way of uniting mind and body, and also the environment and us. The most memorable university lectures I attended as a student many years ago were on cultural traditions of ancient Eastern civilizations. They helped me understand that we are part of nature, despite regarding ourselves as aristocratically detached from other creatures. I also learned that the energies in the universe and inside us abide by the same law, a desire to achieve balance. Yoga changes our physical performance. But more importantly, it can spark in us different mental and intellectual performance. With the control that it teaches over ourselves, we learn how to make change and impact. Since that university lecture, I've been an admirer of yoga. I'm very proud of my daughter, who has already reached a high level of practice and is continuing her journey. Thanks to her, I understand better yoga's ethical guide. The guide which includes the principle of non-stealing, non-greed, non-hoarding, and non-violence. In other words, yoga's ethical guide to living is a guide to sustainability. Not overusing resources that belong to all of us. Not prioritizing short-term gains over planetary boundaries. And working for transformation. Our world needs balance, self-control, and creativity, just as it needs recognition of moral responsibilities and cherishing peace and justice. There are many ways to approach these aims. Yoga is one of the means, for which I have a special respect. I'm happy to be here with all of you today. But let me apologize in advance. I am not a yoga practitioner, and the positions which you will show might look very different from what I end up doing. Still, I'm here with an open heart and open mind. Thank you very much. Thank you, President Karoshi, for highlighting the transformative power of yoga and in such a very personal way. At this time, I would now ask that Mayor Eric Adams, the mayor of the city of New York, please take the stage. To Prime Minister Modi, to President of the General Assembly, to Deputy Secretary General, to Your Excellencies, to the Ambassador, to all of you, do not miss the significance of this moment. New York City is the largest and most important city in America.
as I stand before you as the mayor of that city, I share with you in a clear and a universal tone that we are no longer focused solely on the physical body, but the anatomy of our spirit. For far too long, we have separated what our needs are emotionally, spiritually, and physically. We are going to go to the root causes of that which troubles many of us, from how we interact, to the food we eat, to allowing our children to have breathing exercises in the morning as they start their school day, to challenge the mental health issues that's impacting us. But there's a larger challenge for all of us. What we do on the mat and practicing yoga must become what we do on the streets and in our countries. We cannot become universally connected through the yellow mats we lay on, but disconnected as we move through our communities. Use the spirit and emotions of yoga to challenge and fight against war, to fight against gender oppression, to fight against violence, to fight against the lack of clean water, to fight against the food insecurity, to fight against the destruction of our planet. Our connectivity is not only how we're connected to our families and our parents. We have two mothers. One gave birth to us and one sustains us. Yoga keeps us connected to both mothers and connected to each other. This International Yoga Day is an international call for us to stand up for humankind across the globe and all living beings. I'm proud to be here, and I'm proud to symbolically represent this city as stating the International Yoga Day is an international call that we will be a leader here in New York City, as you are a leader in your own environments. Thank you for allowing me to rejoice with you today. Thank you, Mayor Adams, for spotlighting how yoga is integral to the anatomy of one's spirit. We appreciate that perspective and input. I'd like now to go to the video message of the UN Secretary General Antonio Guterres, who is not available to be with us in person, but is here in spirit. Please let us go to the videotape. Happy International Day of Yoga. I want to recognize Prime Minister Modi for all he has done to promote understanding of yoga and its many benefits. Yoga unites. It unites body and mind, humanity and nature, and millions of people across the globe for whom it is a source of strength, harmony, and peace. In a dangerous and divided world, the benefits of this ancient practice are particularly precious. Yoga offers a haven of calm. It can reduce anxiety and promote mental well-being. It helps us to develop discipline and patience. It connects us to our planet, which so badly needs our protection. And it reveals our common humanity, helping us to understand that despite our differences, we are one. On this International Day of Yoga, let us embrace the spirit of unity and resolve to build a better, more harmonious world for people, planet, and ourselves. Friends, it is one of the deepest honors and privileges of my life to extend a heartfelt welcome, a heartfelt welcome and an invitation to no one else but the Honorable Prime Minister of India, Modi ji. I ask that on this auspicious occasion that he join us and that he address us with his remarks. Let us give him a very, very warm welcome. Thank you. Your Excellency, Chaba Koroshi, President of UN General Assembly, Her Excellency,
Amina Mohammed, Deputy Secretary General of the Union, His Excellency Eric Adams, Mayor of New York, and my dear friends from all over the world. Namaskar. Friends, on this fine morning, we are gathered here at the United Nations, at the meeting point of entire humanity. In this wonderful city of New York, I know many of you have come here from far away. Most of you have woken up before sunrise and made the effort to come here. I'm delighted to see you all, and I thank you all for coming. Friends, I'm told that almost every nationality is represented here today. And what an amazing cause to bring us all together, yoga. Yoga means to unite. So your coming together is an expression of another form of yoga. I remember about 9 years ago, right here at the UN, I had the honor to propose celebrating the International Day of Yoga on 21st June. It was wonderful to see the entire world come together to support the idea back then. I've just paid respect to the brave UN peacekeepers. In 2015, I had called for a new memorial to be built at the UN in their memory. And last week, the whole world joined hands with India to make this reality soon. As the largest troop contributing nation, we are grateful to all nations for their expression of support to this noble cause. Last year, the entire world came together to support India's proposal to celebrate 2023 as the International Year of Millets. Millets are a superfood. They promote holistic health and are good for environment too. And today, it is wonderful to see the entire world come together again for yoga. Friends, yoga comes from India, and it is a very old tradition. But like all ancient Indian traditions, it is also living and dynamic. Yoga is free from copyright, free from patents, and free from royalty payments. Yoga is adaptable to your age, gender, and fitness level. Yoga is portable. You can do it at home or at work
or in transit. Yoga is flexible. You can practice it alone or in a group, learn from a teacher, or be self-taught. Yoga is unifying. It is for everyone, for all ethnicities, for all faiths, and for all cultures. Yoga is truly universal. Friends, when we do yoga, we feel physically fit, mentally calm, and emotionally content. But it is not just about doing exercise on a mat. Yoga is a way of life, a holistic approach to health and well-being, a way to mindfulness in thoughts and actions, a way to live in harmony with self, with others, and with nature. I am delighted that many of you are working on scientifically validating different aspects of yoga. Indeed, this is the way. Friends, I know you are all keen to get started. Well, so am I. I want to thank the United Nations for hosting us here today. I am grateful to the Mayor and the City of New York for all their help and support in making this event success. And most of all, want to thank you all once again for being here today. Let us use the power of yoga not only to be healthy, happy, but also to be kind to ourselves and to each other. Let us use the power of yoga to build bridges of friendship, a peaceful world, and a cleaner, greener, and sustainable future. Let us join hands together to realize the goal of one earth, one family, one future. I conclude with a wish. Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya. May everyone be happy. May everyone be healthy. Thank you. Thank you, Prime Minister Modi ji, for conveying such an inspirational message to us, for elaborating more about our theme, Vasudeva Kutumbakam, and stressing how yoga is really a way of life. At this time, I request that our esteemed dignitaries please leave the stage and join us below for the yoga lesson, because we would like to start that soon. You may Friends, I'm now going to call upon yoga instructor Miss Annalise Richmond so that she can join on the stage. Quickly. We're going to prepare the stage so that we can get it ready for our yoga lesson. I've mentioned before that we'll have 6 energetic youngsters leading us along with Miss Annalise Richmond in this lesson. And we have more in the first row here on the north lawn joining us so that people behind can also follow that way too. I'm requesting that everyone stay on your yoga mat in your spot and to follow our yoga instructor and our yoga practitioners
to the best of our ability. It's such a beautiful morning to have this opportunity to engage in yoga. The sun is not so strong, and we have a nice breeze coming through, which makes for a very pleasant morning for us to all share in this collective group. I'm delighted now to hand over the floor to our accomplished yoga instructor, Miss Annalise Richmond, who will now start our yoga session. Thank you, Denise. A very warm welcome to our Honorable Prime Minister Modi ji and dignitaries. It is an honor to have you with us in our midst. We are delighted. Let us all enter into the world of yoga together. Can you hear me in the back? Yes. Good. Let's bring our hands together in front of the heart in prayer pose. Keep the shoulders relaxed. And we'll do an invocation together. We'll be chanting Om 3 times together. Let's close the eyes. Let's take a deep breath in and breathe out. Breathe in and breathe out. And let us chant Om. Deep breath in. Breathe in. Sangachadvam samvadadvam samvo manamsi janatam deva bhagam yatha purve sanyana upasate sanyana upasate Sanyana upasate. Let's relax our hands in our lap. And when you feel ready, you can gently open your eyes. We'll start our yoga sadhana, our yoga practice, with some loosening exercises to increase the circulation in the body. So let's stand up. We'll start in samasthiti, alert posture. So the feet 2 to 3 inches apart from each other in parallel. Stand with the spine tall. And let's bring our hands onto our waist. We'll do neck exercises first. Be careful in case of any neck injuries or cervical spondylitis here. Let's inhale, stretch the spine. Exhale, bring the chin to the chest as much as you can, all the way to the chest. Inhale, raise the head back up. Exhale, let the chin and head fall back, face to the sky. Inhale, head to the center. Exhale, chin to the chest. Relax.
Inhale, bring the head back to the center. Exhale, let the head go back, stretching the front of the neck. And one more time, inhale to the center. Exhale, chin to the chest. Stretch the back of the neck. Inhale the head to the center. You can smile. And exhale, let the head go back gently. Open the throat and chest. Inhale back to the center. Relax. Good. Keeping the hands on the waist, we'll twist the neck from right to left. Be careful not to jerk the neck. Let's inhale, stand tall. Exhale, turn the chin over the right shoulder. Look all the way over to the right. Feel the stretch in the left side of the neck. Inhale back to the center. Smile. Exhale, the chin over the left shoulder. Feel the stretch in the right side of the neck. Good. Inhale back to the center. And exhale, chin over the right shoulder. Look as far as you can with the eyes. Inhale, back to the center. Breathe in. Exhale, chin over the left shoulder. Look to the left. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, relax. Good. Now we'll do trunk twisting to warm up the body and spine. Be careful of any spinal injuries in this warm-up. So let's bring the feet 1 foot apart. Feet in parallel in Samasthiti, alert posture. Back is tall. Inhale, take the arms out in front of you, hands parallel to each other. Exhale, keep the hips where they are. Turn just the upper body to the right. Left palm towards the right shoulder. Look to the right. Good. Inhale, come back to the center. Palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the left. Palm facing the left shoulder. Good. Inhale, come back. Looking forward, palms facing each other. Exhale, twist just the upper body to the right. Look to the right. Left palm to the right shoulder. Good. Inhale, come back to the center. And exhale, twist just the upper body to the left. Right palm towards the left shoulder. Good. Inhale, come back to the center. You can smile. Exhale, relax. Good. Now let's start our yoga asanas, or yoga postures. We'll start with Tadasana, the palm tree posture. If you have any arthritis in the lower extremities, don't raise up onto your ankles in this posture. So for Tadasana, we'll start in Samasthiti, feet 2 to 3 inches apart from each other. And inhale, raise the arms up to shoulder height. Exhale, clasp the fingers and push the palms away from you. Good. Inhale, raise the arms up. Exhale here, lengthen the spine. Inhale, come up onto the toes and breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, grow taller. And breathe out. Slowly lower down the feet. Unclasp the hands slowly with awareness on the body. Lower the arms down slowly. Good. And relax. And now again, let's bring the feet 2 to 3 inches apart. Samasthiti, alert posture. We'll take a back bend. If you have any vertigo or back injuries, be careful with this pose. So Ardha Chakrasana, the half wheel posture. Let's take the hands to the waist. Inhale, grow tall. Exhale, slide the fingers back to support the back, elbows in parallel behind the back. Inhale, let the head go back, opening the front of the neck. As you exhale, bend from the lumbar spine, go back carefully and easily as far back as you can. And let's breathe here. Breathe in and breathe out. Breathe in and out. Awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Inhale, lift the chest, come back up. Slowly. Good. And exhale, relax. Good. We'll take a forward bend. Pada Hastasana, the hands to the feet posture. So keeping the feet in parallel, 2 to 3 inches apart from each other. Inhale, take the arms up from the front, all the way up.
And exhale, bending only from the hip joint. Keep the legs straight. Start to reach forward. Stretch your fingertips forward till your body is like a table parallel to the ground. And now slowly lower the fingertips down. Either bring the hands to the shins or fingertips to the ground, or the palms on the ground if you can. Drop your head towards your knees. Let's take a few deep breaths. Breathe in. And breathe out. Keep the legs straight. Breathe in. As you breathe out, head towards the knees. Breathe in. Breathe out. Go a little further. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale, slide the fingertips forward. Stretch the arms forward. Let the back come up with the arms. Breathe in slowly. Come all the way up. Smile. Good, and relax. Excellent. And we'll go to the floor. You can just stretch the legs out in front of you. Put your hands behind your back in a relaxed posture. Let the head go back a little. Vishramasana. This is our relaxation pose. And now let's bring the feet together, toes pointing up to the sky. Hands beside the hips, spine tall. Tadasana. Inhale, lengthen your spine. Good. Exhale, press the hips into the ground. And now we'll do Bhadrasana, the firm posture. So be careful in this posture in case of sciatica or arthritis. Let's inhale, bring the feet together, soles of the feet together. Exhale, wrap your hands around your feet. Good. Inhale, sit tall. And exhale, pull the heels as close as you can to the perineum. Relax. If you like, you can even close your eyes here. Breathe in. Exhale, let the knees drop towards the ground. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Breathe into the whole body. Breathe in and breathe out. Good. Gently stretch the legs back out. Put the hands behind your back. Recline back just a little. Again, Vishramasana. Let the head fall back a little. Good. And again, we'll come into Dandasana. The toes pointing up. Hands beside the hips. Press down into the ground a little. Lengthen the spine. Breathe in. Exhale. We'll come into Vajrasana, the diamond pose. Be careful of this pose in case of ankle or knee injuries. Let's inhale. Bring the right heel towards the right buttocks. Exhale. Inhale. Left heel towards the left buttocks. Place the buttocks in the space between the toes and the heels. Hands on the knees. And you can gaze softly downwards or close the eyes. Let's take a few deep breaths with the awareness on the whole body. Breathe in and breathe out. Breathe in and breathe out. One more breath. Breathe in and breathe out. And when you feel ready, you can open the eyes. Good. We'll take a back bend. We'll take the half camel posture, Ardha Ustrasana. Let's inhale, come up onto our knees. Ooh, that's a relief, isn't it? Okay, and let's bring our hands onto our lower back. Be careful in this pose in case of vertigo or any spinal injuries. So let's inhale here. Bring the elbows towards each other behind the back. Let the head fall back. And exhale, bend backwards from the upper back, arching backwards, chest to the sky. Breathe in, breathe out. Let the head fall back easily. Breathe in, breathe out. Breathe in and breathe out. One more time. Breathe in and out. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body.
Good. Exhale, gently relax. Good. Now we'll bend forward. So we'll take Shashakasana, the hare posture. So be careful in case of osteoarthritis of the knees. You can come out of this posture. Yeah? Inhale, open the knees. Exhale, let's put the hands between the legs. Inhale, lengthen your spine. And exhale, slide forward gently and slowly, all the way, keeping the arms in parallel with each other. Bring the chin to the ground if you can, and relax the whole body. If the chin doesn't want to touch the ground, bring the forehead to the ground and relax. Breathe into your hips, breathe in, breathe out. Deep breath in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more gentle breath in and out. Good. Inhale, come back up slowly with awareness on the whole body. Breathe in. Exhale, close the knees. Good. And we'll take the stretched up frog posture, Uttana Madhukasana. So inhale, let's take the knees to the side. Again, if this is bothering your knees, you can sit in a different position for this. Yeah. Inhale, take the arms up from the front, stretch the spine, smile, and exhale, bend from the elbows only. The palms onto alternate shoulder blades. Right palm on the left shoulder blade, left palm on the right shoulder blade. See if you can keep the chin parallel to the earth. And let's take a few deep breaths. Breathe in. Breathe out. Breathe into the chest. Notice the chest is opening. Breathe in. Breathe out. You can smile. Breathe in. And breathe out. Good. Inhale. Raise the arms up. Good. Exhale. Relax. And you can close the knees. And the moment you've been waiting for, let's slide down onto our mat on our stomach. Come all the way down. Make a pillow with the hands. Turn your head to the right side. Take your feet 2 feet apart or so. Let them splay out to the side. Turn the head. Put it onto the hands. Makarasana, crocodile pose. You're like a crocodile resting in the sun. Let the breath relax. Good. Now bring the legs together. Take the arms out in front of you. You can have them resting on the ground. We'll do Bhujangasana, cobra pose. Be careful of this pose in case of hernia or any abdominal injuries. Inhale, bring the hands underneath the shoulders, elbows close to the body. Exhale here. And inhale, lift the head, chin, chest, upper chest until the navel. And breathe here. Deep breath in. Breathe out. Relax the shoulders. Push them down and back. Breathe in. And breathe out. Breathe in. And breathe out. One more breath in. Come a little higher. And exhale. Slowly lower down. Again, make the pillow with the hands. Turn the head this time to the left side. Legs apart. Makarasana on the other side. Crocodile pose. Resting in the sun. Let the breath relax. Now gently, let's turn onto our backs. Gently roll to the back. Relax. And we'll do Pavan Muktasana, the wind-freeing posture. So inhale, bring the knees up. Exhale, bring the knees to the chest, towards the chest. Inhale, clasp the fingers together, place them on the shins, wrap the arms around the legs.
Exhale, bring the forehead towards the knees until the chin or nose touches the knees. Breathe in and breathe out. Deep breaths. Awareness on the whole body. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. One more breath. Breathe in and exhale. Release the head down. Relax the legs. Slide them down onto the ground. Let the legs be 1 to 2 feet apart. Let the toes fall out to the sides and the arms by your sides, palms facing up to the sky, relaxing the arms on the ground. Shavasana or corpse pose. Relax the whole body. Become aware of the natural flow of the breath. And let's take our attention to our toes and feet, ankles, legs, knees, thighs, and hips, our abdomen, stomach, chest, shoulders, right arm and hand. Eyes are closed. Left arm and hand. The neck and the throat. The head and face. Eyes. The top of the head. The whole body. The whole body. Slowly and gradually, take a deep breath in and breathe out. Let's turn and rest on our right side for a moment, resting on the right side. Slowly and gently, come all the way back up to a comfortable, easy seated position. You can sit cross-legged if you like, or in lotus or half lotus. Sit with the spine tall. And we'll practice some breathing techniques or pranayama. So with the spine tall, let's bring our hands into Gyan Mudra. A mudra is a hand position that directs the flow of prana or energy in the body. The index finger and thumb are lightly touching, and the backs of the hands resting on the lap. Good. We'll do Kapalabhati breathing. So in Kapalabhati breathing, we'll be forcefully contracting the abdomen, and the air forcefully shoots out of the nose like this. In Kapalabhati breathing, after we contract the abdomen and the air comes out of the nose, the inhalation happens on its own. Okay? We'll take 20 repetitions of Kapalabhati breathing. So let's close the eyes. Take a deep breath in through the nose
And we'll take 20 rounds of Kapalabhati. Let's begin. Relax. With the eyes closed. Relax the hands. Notice the energy or prana in the body, all over the body. When you feel ready, you can open your eyes. Good. And we'll do Nadi Shodhana Pranayama, or alternate nostril breathing. So let's bring the left hand into Jnana Mudra, index finger and thumb lightly touching, other 3 fingers extended. Rest the left hand on the knee, left knee. And the right hand, let's take it into Pranayama Mudra. So you'll bring the index and middle finger towards the palm and place the right thumb on the right nostril. Close the nostril. And exhale out of the left nostril, close the eyes. Good. Inhale through the left nostril. Close it with the ring finger. And exhale out of the right nostril. Good. Inhale through the right. Close the nostril with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left. Close with the ring finger. Exhale out of the right. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. Inhale through the left nostril. Close with the ring finger. Exhale out of the right. One more. Inhale through the right. Close with the thumb. Exhale out of the left. With the eyes closed, relax the right hand in the lap. If you like, you can bring it into Gyan Mudra. Relax the hands. And notice the balance in the body and the balance between the right and left hemisphere of the brain. And when you feel ready, you can gently and slowly open your eyes. We'll do one more pranayama, Brahmari pranayama. So let's bring, again, the hands into Gyan Mudra, index finger and thumb lightly touching. In Brahmari pranayama, we'll be making the sound of a bee, a humming sound, like this. We'll do this with a special mudra called Shanmukhi mudra. We'll be closing off all of the senses. Yeah? So let's bring the hands towards the face. Shanmukhi mudra, we close the eyes, gently touch the index fingers onto the eyelids, and then the middle fingers onto both sides of the nose without closing the nostrils. The ring finger above the lips, right below the nose, and place the pinky finger right beneath the lips. And we'll be, in a moment, closing the ear flaps with the thumbs. And we're going to be taking deep breaths in and breathing out with the humming sound 3 times. So let's go ahead and close the ear flaps with the thumbs. Take a deep breath in. And breathe out with a humming sound. Deep breath in. Again with the humming sound. One more time. Deep breath in. Breathe out.
With the eyes closed, relax the hands in the lap. We'll be practicing dhyan or meditation. You can keep your eyes closed and bring the hands into dhyan mudra, which is into the center of the lap. Bring the right hand into the center of the lap, palms facing up, and the left hand into the center of the lap, and bring the right hand on top of it, both palms facing up. The palms are stacked. And with the eyes closed, let's take a deep breath in and breathe out. Relax the shoulders. Take a long, deep breath in. As you breathe out, feel the weight of the body dropped onto the ground where you're sitting. Become aware of the whole body and become aware of all the sounds around you. Any sounds that you hear, notice them and let the sounds be there as they are. You are in harmony with the environment as it is. Take a deep breath in and breathe out. Become aware of any thoughts that are floating through the mind. Do not resist any thoughts. Let them come. Now you are in harmony with the thoughts, with the mind. And become aware of any feelings, pleasant or unpleasant. Accept the feelings as they are. You are peace. You are joy. Breathe in and let go. Again, become aware of your feelings. Become aware of your thoughts. Become aware of your whole body. And let's immerse ourselves in the sounds. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
Take a deep breath in and breathe out. A long, deep breath in and breathe out. Become aware of your whole body and where you're seated on the earth. Breathe in and breathe out. And slowly and gently, when you feel ready, you can gradually open your eyes. Good. Namaste. Om Shanti Shanti Om, everyone. What an uplifting and revitalizing yoga session we've had. And the sun even started to come out even more, shining its rays upon us so gloriously. We're here in this beautiful North Lawn of the United Nations headquarters in New York City, celebrating World Yoga Day 2023. A sincere thank you, Annalise Richmond, and to all our young yoga practitioners who've helped to demonstrate during this yoga session. We have an unforgettable event with them and for the youngsters in the first row leading us as well this morning. One more round of thanks to them as they exit the stage and take their leave. Namaste. Namaste. Have a beautiful day. Our deepest gratitude to the Honorable Prime Minister of India, Narendra Modi ji, for gracing us with his presence and in creating this wonderful memory at the iconic United Nations headquarters that we cherish from years to come. Friends, I am going to ask if you can please stay in your seats. Please remain seated while the Honorable Prime Minister of India meets and greets participants. The Honorable Prime Minister will meet and greet participants. May I ask for your cooperation and your understanding. Friends, may I ask that you remain seated at your yoga mats, please, as the dignitaries and His Excellency Prime Minister Modi ji meets and greets and mingles with some people. Excellencies and friends, I have some incredible news to share. A Guinness World Record is created today. Today we have gone for a Guinness World Record now in the books. It's a world record for the most nationalities in a yoga lesson. The most nationalities in a yoga lesson right here at New York UN headquarters. Big congratulations to all of us for being part of this historic event. To share more details and conducting this formal proceeding, I'd like to have the Guinness World Records official adjudicator, Mr. Michael Emprick, to the stage. I'm going to ask people to please
जी बिल्कुल, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं यूएन मुख्यालय न्यूयॉर्क से, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, शामिल हुए, इसका नेतृत्व किया उन्होंने। और इस मौके पर उन्होंने वैश्विक कल्याण पर खास तौर पर जोर दिया और कहा कि भारत की देन है योग, और ये योग जो है वो दुनिया को जोड़ता है, एक करता है। इस मौके पर कई खास बातें उन्होंने कही। दरअसल आज दुनिया भर में योग दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के योग कार्यक्रम में शामिल हुए। यूएन मुख्यालय से अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग भारत से आया, इसे किसी भी उम्र के लोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी प्राचीन भारतीय परंपराओं की तरह यह भी जीवंत और गतिशील है। योग जीवन का एक तरीका है, ये विचारों और कार्यों में सावधानी बरतने का एक तरीका है। यह स्वयं के साथ, दूसरों के साथ और प्रकृति के साथ सद्भाव से जीने का तरीका है। 180 देशों के प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और एक जो खबर आ रही है उसके हिसाब से एक विश्व रिकॉर्ड भी आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर बना है। जाहिर तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण पल है भारत के लिए, क्योंकि योग दुनिया के लिए भारत की देन है। मधु जी, आप कैसे देखती हैं इस कार्यक्रम को, जब यूएन मुख्यालय पर आज योग का इतना बड़ा कार्यक्रम और उसका नेतृत्व भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं? जी, ये बहुत ही एक ऐतिहासिक क्षण है, ऐतिहासिक पल हैं, जब माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो नेतृत्व किया उन्होंने यूएन हेडक्वार्टर्स में और योग किया है, और बहुत ही अच्छा संदेश दिया है पूरे विश्व को कि योग जो है वो सभी के लिए है। योग जो है यूनिवर्सल है, और योग जो है वो हमें अपने साथ जुड़ना, सबके साथ जुड़ना और प्रकृति के साथ भी जुड़ना सिखाता है, कैसे समन्वय बना के रखा जाए, ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। और देखिए किस प्रकार पूरा विश्व जो है प्रभावित है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, उनके विचारों से, और योग से प्रभावित हो रहा है। योग जो हमारे विश्व की हमारे देश की प्राचीन जो कला है वो हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व में उसको फैलाया जा रहा है, पूरे विश्व में उसका विस्तार हो रहा है, प्रचार हो रहा है, प्रसार हो रहा है, और सभी जो है योग के महत्व को, उसके एसेंस को समझ पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा ये सब देखकर, और ऐसा लगा कि हम भी वहाँ पे होते कितना अच्छा लगता है, बट यहाँ से देखकर भी बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ, बहुत प्राउड फील हुआ। एक विश्व रिकॉर्ड भी बना है कि इतने सारे जो कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर थे, एक साथ किया सभी ने, हमारे जो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, बहुत ही हमारे लिए गर्व का क्षण है और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत Absolutely incredible visuals that we have seen coming in straight from the north lawns of the UN headquarters in New York City. There you see live visuals because the event has created a Guinness World Record. The educator of the Guinness World Record presenting the certificate to India's permanent representative at the United Nations, Ruchira Kamboj. Present is the Prime Minister Narendra Modi. So it's been a historic event, Madhuji, of course, as you rightly said. But what's important, and it's a matter of great pride for us, the kind of acceptance that we're seeing. It's part of our culture, our tradition, ancient culture, something that we are extremely proud of. And now we see the entire world, representatives from 180 countries sitting there at the UN headquarters and performing a live yoga session. Somebody who was actually leading the session was not an Indian, so another proud moment because she was conducting the session so beautifully. Yeah. The fact that yoga has done something which has been unparalleled. It's part of India's soft power, and we see that kind of acceptance globally happening today. Yes, actually, this is really very, I can say that it's a soft power of our country, and with yoga, we can, connect the countries. Like the theme of this year is Vasudhaiva Kutumbakam. Like we are uniting the whole world with the power of yoga. So that is the power of yoga, and that is the power of India. I can say that India has really become powerful with its yoga, its ancient science, and spreading the message across the world. And now all the countries, I can say, major countries of the world are accepting the power of yoga. You can see visuals from your screen. Prime Minister mingling with the people there, with the young students who were there on stage performing the yoga session. That's something, मनोज जी, जो प्राइम मिनिस्टर का एक अपना व्यक्तित्व है, वो एक डिग्निटरी की तरह जाते हैं, पर जब उस इवेंट से बाहर आते हैं, जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह वो लोगों से घुल मिल जाते हैं, वो एक उनकी पर्सनालिटी का एक अभिन्न रूप है जो हम 2014 से देखते आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप देखिए जिस तरह से भारतीय परंपराओं, भारतीय संस्कृति,
या योगा की बात की जाए, जिस तरह से वैश्विक स्तर पे प्रधानमंत्री जी ने आज भारत की छवि को दुनिया के सामने रखा है, उसका श्रेय उन्हें ही जाता है। चाहे यूएन से वो प्रस्ताव हो जिसमें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाए, ये तय हुआ, और आज यूएन मुख्यालय से जिस तरह से विश्व रिकॉर्ड बना है अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर, वो भी एक संदेश देता है। एक खास बात टीना और रही कि प्रधानमंत्री जी ने इस मौके पर जो कहा, जिसके लिए भारत दुनिया भर में जाना जाता है, उसी बात को उन्होंने कहा कि भारत की जो देन है योगा पूरी दुनिया के लिए, वो दुनिया को जोड़ती है, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए है, और दुनिया एक साथ आगे बढ़े, सभी लोग सुख से जिएं, सभी लोग निरोगी काया के साथ जिएं, ऐसा संदेश प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में दिया। देखिए, एक बड़ा व्यक्तित्व दिखाता है प्रधानमंत्री जी का कि किस तरह प्रधानमंत्री जी पूरी दुनिया को साथ लेके चलने का संदेश देते हैं, पूरी दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, पूरी दुनिया के को एक साथ विचारों और कार्यों के साथ चलने का संदेश देते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री का ही वो करिश्मा है कि जो हमें अमेरिका में देखने को मिल रहा है। आज यूएन मुख्यालय से जिस प्रकार उनकी लोकप्रियता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, और साथ ही अगर मैं कहूं, अगर प्रधानमंत्री जी कोई बात कहते हैं, जिस चीज़ पे जोर देते हैं, वो सादगी, वो समर्पण उनका देखने को भी मिलता है कि सबके साथ जिस तरह से उन्होंने योगा किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज यूएन मुख्यालय पर, यह भी अपने में एक बहुत बड़ा संदेश है। जी मधु जी। जी, बहुत ही अच्छा लगा मोदी जी जिस प्रकार बच्चों के साथ घुल मिल रहे हैं, और बच्चों ने भी योग किया, सभी उम्र के लोगों ने जो है यहाँ पर योग किया है। और ये उनका, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो प्रभावशाली व्यक्तित्व है, उसी का प्रभाव है कि जो भी उनसे मिलता है वो बस उनका फ़ैन हो जाता है, आई कैन से, और सभी प्रभावित है। और योग की भी ये पावर है उनके अंदर। प्रधानमंत्री जी खुद भी योग करते हैं और पूरे विश्व को जो है योग का संदेश दे रहे हैं, योग के महत्व, क्योंकि उन्होंने किया है, क्योंकि वो खुद कर रहे हैं, क्योंकि वो साधक हैं योग के, तो उन्होंने अनुभव किया है और वो सभी को सिखा पा रहे हैं। तो इसी प्रकार अगर हम भी योग को करते हैं तभी हम उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि वो एक यौगिक पर्सनालिटी हैं। अगर आप उनके व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो वो चाहते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो, कल्याण हो। उनके अंतिम शब्द जो हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, कि सभी जो हैं वो सुखी हों और सभी स्वस्थ हों। वो बहुत ही दिखाता है कि कैसे हमारे प्रधानमंत्री जी की विचार हैं, सोच है, और वो चाहते हैं कि सबका भला हो। जी बिल्कुल मधु जी, और ये काम वो साधक ही कर सकता है जो सबके सुख की कामना करता है, सबकी निरोगी रहने की कामना करता है। मेरे सहयोगी इस समय सूरज मोहन झा जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, यूएन मुख्यालय से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संदेश, पूरी दुनिया के वैश्विक कल्याण पर जोर, शांति पर जोर, आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या महत्व है, अगर हम जानना चाहें आपसे? बिल्कुल मनोज जी, अब जो योग है वो एक वैश्विक पर्व बन चुका है। और हमने देखा आज मनोज जी की देश भर में, भारत में हमने जगह जगह देखा उसका कार्यक्रम, चाहे लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में रहा हो, उपराष्ट्रपति की अध्यक्षता में जबलपुर में हमने देखा, देश के अलग अलग हिस्सों में, चाहे वो पहाड़ी हिमालय के क्षेत्र हो या तपते रेगिस्तान हो, लोग योग कर रहे थे। और अब हमने देखा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में यूएन के हेडक्वार्टर में 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जहां पर एक विश्व रिकॉर्ड बना है। पहली बार इतने देश के लोगों ने एक साथ योगा अभ्यास किया। ये कहीं ना कहीं अपने आप में इसकी उपलब्धि बताता है। भारत में योग की उत्पत्ति हुई और आज उसका विस्तार पूरे विश्व में हुआ है। 9 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी के ही प्रयासों से यूएन ने इसे आत्मसात किया था और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर इसकी पहचान आज की तारीख में दी थी। और आज हम देख रहे हैं, जिस तरह आपने कहा कि विश्व कल्याण की बात हो रही है, और इस बार का थीम भी है वसुधैव कुटुंबकम, सभी पूरा जो विश्व है वो एक परिवार है। और ऐसे दौर में जब हम देख रहे हैं कि दुनिया अभी इस समय यूक्रेन और रूस के युद्ध से पीड़ित है, ऐसे में कहीं ना कहीं योग के माध्यम से, यूएन के हेडक्वार्टर से विश्व शांति, सभी में एकता रहे, इस तरह के भाव की बात कही जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां संबोधित किया और हमने देखा यूएन के तमाम ऑफिशियल्स वहां मौजूद थे। 135 से ज्यादा देश के लोग वहां मौजूद थे, जिस वजह से एक विश्व रिकॉर्ड भी कायम हुआ है। और कहीं ना कहीं ये भारत के
जो ऐतिहासिक महत्व है, सभ्यता है, उसको एक पहचान भी पूरे विश्व में मिला है। योग मात्र एक अभ्यास या शरीर को निरोगी करने की काया का एक अभ्यास नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं शांति, पूरा विश्व एक हो, इसकी बात है। और आज यूएन से यही संदेश मनोज जी हमने देखा, एक सहोदर होने का विश्व शांति का संदेश, विश्व कल्याण का संदेश जो है वहां से गया है और तमाम लोगों ने वहां योगाभ्यास किया। ये कहीं ना कहीं एक उपलब्धि है और ये इस साल और बड़ा हो जाता है क्योंकि 2014 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर पहचान मिली। आज 9वां उसका की वर्षगांठ थी और वो यूएन के हेडक्वार्टर में मनाया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। मनोज जी, सूरज जी, अगर योग की बात प्रधानमंत्री जी ने की, उसके साथ साथ मिलेट यानी श्री अन्न की बात भी कही, मोटे अनाज की बात भी कही कि लोग स्वस्थ रहें, उसके लिए भोजन कैसा हो, इसका भी संदेश प्रधानमंत्री जी ने दिया है। जाहिर तौर पे देश का, भारत का संदेश भी है। प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लगातार इस बात पे जोर दे रहे हैं कि मोटे अनाज यानी मिलेट्स का किस तरह से उपयोग किया जाए, वो भी दुनिया के लिए एक अच्छा संदेश है। इसे आप कैसे देखते हैं, योग और मिलेट्स को जोड़ना? बिल्कुल, ये अपने आप में एक अनोखा आप कह सकते हैं। जब हम सुनते थे योग अलग से या जब उन्होंने मिलेट्स की बात की थी तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि ऐसी चीजें आम लोगों में पॉपुलर कैसे होंगी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी किसी भी योजना को जब लागू करते हैं, किसी कार्यक्रम को जब चलाते हैं, तो वो एक अच्छे कम्युनिकेटर हैं, अपनी बात को आम जन तक पहुंचा लेते हैं और वो कहीं ना कहीं जो है एक जन चर्चा का विषय बन जाता है। और हम देख रहे हैं आपकी योग जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है, पूरी दुनिया में 180 से ज्यादा देशों में योग को पहचान मिली है। उसके साथ में मिलेट्स, उन्होंने इसको लेकर बात की। हमने देखा संसद में संसद सत्र के दौरान उन्होंने इसका आह्वान सभी जनप्रतिनिधियों से किया था। तमाम मंचों पर वो सभी से कहते रहे हैं कि मिलेट्स जो है, मोटा अनाज है, उसके जो हमारी पुरानी सभ्यता का हिस्सा रहा है, हम पहले उसको अपने आहार प्रणाली में रखते रहे हैं, जिसके कारण हम स्वस्थ रहते थे। अब चूंकि हमारी जो जीवन पद्धति है वो बदली है, हमने और जंक फूड के जमाने में तमाम तरह के रोग हमने उसके साथ अपनाए हैं, चाहे डायबिटीज हो, बीपी हो या हार्ट से संबंधित, दिल से संबंधित समस्याएं होती हैं। ऐसे में अगर ये मोटा अनाज जो हमारे पुरातन संस्कृति का हिस्सा रही है और जो हमारे आम दिनचर्या का हिस्सा रही है, उसको हम दोबारा से अगर आत्मसात करते हैं तो कहीं ना कहीं योग से हम शरीर को निरोगी बनाते हैं और मिलेट्स, मोटे अनाज से कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य को अच्छा करते हैं। तो इस अभियान को हमने देखा, आज यूएन से भी उन्होंने उसको कहा और भारत के साथ साथ पूरे विश्व में इसको मिल रहा है, एक पहचान मिल रही है, लोग इसे आत्मसात कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये अगर हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और अच्छे विचार और अच्छी जो चीजें हैं, अच्छे इन्वेंशन जो है वो हम कर पाएंगे, विश्व शांति रहेगा। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और ऐसा लगता है ये तमाम प्रयास, चाहे योग के तौर पर हो, चाहे मोटे अनाज के तौर पर हो, ये कहीं ना कहीं सफल हो रहे हैं। और कहीं इसको मैं मनोज जी इसके साथ भी जोड़ना चाहूंगा, मात्र ये स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, बल्कि आप देखें तो रोजगार भी बड़ी मात्रा में दे रहा है। जब योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिला है तो हम देखते हैं योग सिखाने को लेकर, प्रयास कराने को लेकर, आप तमाम पार्कों में सुबह जाएंगे, योगा अभ्यास करते हुए योग टीचर आपको करवाते हुए मिलेंगे। इसको रोजगार के क्षेत्र में एक नया अवसर क्रिएट किया। ऐसे हम मिलेट्स के तौर पर देख रहे हैं, ये मोटे अनाज की जब से चर्चा हुई है और तमाम बड़े रेस्टोरेंट, होटल्स और तमाम जगह इसको प्रचार जब मिल रहा है, लोग इसकी डिमांड कर रहे हैं, तो ऐसे में किसानों के पास भी एक अलग तरह से इसके उत्पादन करने की इच्छा जागी है और कहीं ना कहीं वो उनके लिए एक नया मार्केट क्रिएट कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तौर पर योग हो चाहे मिलेट्स हो, ये हमारे स्वास्थ्य को, दिनचर्या को अच्छा कर रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है उसको भी कर रहा है, विश्व बंधुत्व का जो भाव है उसको भी कहीं ना कहीं बढ़ाने का काम कर रहा है। मनोज जी, at the North Lawns of the UN headquarters in New York City. We are joined by former Ambassador Ashok Sajjanhar on the broadcast as well. Ambassador, welcome to Sansad TV. Your first thoughts on this historic event, the record-setting event with representatives of 180 countries sitting there at the UN headquarters front lawns performing yoga. All right, so we seem to have lost connection with the ambassador. We'll try and reconnect with him. But Madhuji, as you know, my colleague Suraj was saying, International Year of Millets, the 9th year of International Day of Yoga, the fact that we are seeing that kind of acceptance to India's proposal, something that we have inherited from the past, something that we are extremely proud of, and we are propagating it to the world,
in a manner which is going to benefit the world. The idea of a healthy, a sustainable way of living. See, our Prime Minister knows very well that food is also part of yoga. Mitahara is part of yoga. So when our Prime Minister, Honorable Prime Minister Sir, talked about Mitahar, the millets, he is also talking about yoga at the same time, because in our yogic text it is mentioned, Susnigdha Madhura Ahar, Chaturthan Vivarjate Bhujate Shiv Samprite Mitahar Sa Uchyate. That means the food should be well lubricated, it should be very nourishing. Madhurahar, natural, agreeable taste of the food. And 1/4 of the stomach should be free when you're eating food, and we should eat with surrendering bhava towards the divine. And in the text it is mentioned that one should have bajra, jowar, these kind of millets should be taken in the diet. Then only you can get complete benefit of yoga. Otherwise you'll not get that much of benefits. That is why he wants a holistic growth, basically holistic health of the people. That is why he's giving importance to millets also. This is not just to promote market, that is additional benefit, I would say. This is actually to make the yoga complete, because in yoga we also talk about diet. Diet has a lot of importance in yoga. In Bhagavad Gita also there is a concept of sattvic diet, that ayu, sattva, bal, arogya, sukh, priti, vivardhana, rasya, snigdha, sthira, hrida, ahar, sattvic, priya. The food taken by the sattvic people increases ayu, sattva, bal, arogya, and sukh, priti, vivardhana. It increases sukha. Sukh is comfort, happiness, love in us. That is rasya, snigdha, sthira, hrida. That is full of rasa. Snigdha, that is well lubricated, not without oil. Rasya, snigdha, sthira, that is comforting to us. Hrida, ahar, sattvic, priya. This is the food that is liked by sattvic people. That is why our Prime Minister is giving importance to food also. When he is talking about food, he is also talking about yoga at the same time. Yes, one and the same thing. At the same time, one of the striking images from the event at the United Nations headquarters today has been those leading the yoga session were all youngsters. Another message that yoga is not just for those who are elderly, for those who are sick, those who are looking for treatment. It is a way of life which should be adopted as early as possible. Yes, in our text also it is mentioned yoga is for everybody. Yuva, Vriddho, Api Vriddho, all can do yoga. Yoga is not just for elderly people or those who are sick, who are having any problem. This is for youngster also. If we teach our children like yoga from young age, then they'll be better citizen. They'll like do their studies better. They'll be able to concentrate better in their work also. They'll become a better citizen and a better human being, I would say. जी बिल्कुल सहयोगी सूरज मोहन झा जी जुड़े हुए हैं। सूरज जी, यूएन से तो एक बड़ा कार्यक्रम हुआ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसका नेतृत्व किया और संदेश वैश्विक स्तर पे दिया, लेकिन भारत में भी, चाहे अगर मैं संसद भवन की बात करूं तो लोकसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया, योग अभ्यास किया गया। इसी प्रकार जबलपुर में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कार्यक्रम का नेतृत्व किया। किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए और क्या खास बात रही? मनोज जी, आज अगर हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हमने लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन में हमने देखा, जहां पर लोकसभा राज्यसभा सचिवालय के कर्मचारियों के साथ कई सांसदों ने योगाभ्यास किया और एक मैसेज पूरी दुनिया को दिया। उसके साथ में जबलपुर में हमने देखा जहां पर उपराष्ट्रपति के साथ साथ आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल समेत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत हजारों लोगों ने आज योगाभ्यास किया था। और देश के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीर हमें मनोज जी देखने को मिली, चाहे वो हिमालय का क्षेत्र रहा हो, रेगिस्तान का क्षेत्र रहा हो, मैदानी क्षेत्र रहा हो, समुद्री इलाका रहा हो, इस तरह का एक माहौल रहा है। अभी मैं इंडिया गेट पे हूँ कर्तव्य पथ पर, यहाँ भी आप देख सकते हैं लोग जो है वो आज शाम के टहल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मना रहे हैं। ऐसे ही में हमारी मुलाकात पूर्व राज्यपाल सिक्किम के और पूर्व गृह सचिव वीपी सिंह साहब से हुई, जो शाम को टहल रहे थे। तो हमने इनसे जानना चाहा, सर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है आज और यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री ने वहां संबोधित किया है, साथ में वहां विश्व रिकॉर्ड भी बना है। 136 से ज्यादा देशों के लोगों ने एक साथ योगा अभ्यास किया है। योग को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आज अनूठा दिवस है। भारतवर्ष ने दुनिया को योग की शिक्षा दी है और पिछले 10 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको प्रैक्टिकल रूप दिया है। ये दूसरी घटना है जब यूएन के कैंपस में ये हो रहा है और 136 देशों के लोग हैं
ये अनूठी चीज भारत की है जो कि दुनिया को यूनाइट करती है, और इसमें हमें कोई ये नहीं कहना है कि ये हमारे सिर्फ गौरव की बात है, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति को टच करती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को संवारती है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से जोड़ती है। तो आज खुशी का दिवस है। हम प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, हम अपने देश के नेताओं के आभारी हैं जो सड़कों पर, पार्लियामेंट में, पहाड़ों में, हर एक जगह आज योगा चल रहा है, ऐसी जो कि संस्कार को उत्तेजित करता है, स्वास्थ्य को ठीक करता है। तो मैं तो अचानक आ गया, मैं बराबर आता हूँ कर्तव्य पथ पर शाम को, तो अच्छा लगा कि आपके इस समारोह में मैं भी भाषण। सर, जिस तरह से हम देख रहे हैं यूनाइटेड नेशन में प्रधानमंत्री ने विश्व कल्याण की बात की है, विश्व बंधुत्व की बात की है, वसुधैव कुटुंबकम की थीम के साथ इसको बढ़ाया है, और जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय शांति की हम बात कर रहे हैं, योग भारत से निकला, विश्व शांति का एक मैसेज भारत से ही गया है। ऐसे में जब हम कई देशों में तनाव देखते हैं, योग किस तरह से पूरे विश्व को जोड़ने का काम कर रहा है? देखिए, तनाव जो है वो तो जियो पॉलिटिक्स है, वो तो तरह तरह की बातें। तो अगर आदमी को योग जो है उस तनाव को कम करने का तरीका बतलाता है, उस तनाव को इस रूप से देखने को बताता है कि आप अपना स्वास्थ्य तो ठीक करो, प्रकृति का भी स्वास्थ्य ठीक करो। तो जब आदमी अपना स्वास्थ्य और प्रकृति का स्वास्थ्य दोनों ठीक करेगा तब तो ही शांति आएगी। तो ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। लेकिन ये यूं ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए भारतीयों को ही नहीं दुनिया के लोगों को सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा। आज अनूठा दिन है, आपने मुझे बुलाया, आपको धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमारे साथ सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वीपी सिंह जी थे, जो बता रहे थे कि ये एक अनूठा दिन है जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर विश्व में एक पहचान मिली है और लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मनोज जी, पूरे देश में, पूरे विश्व में आज से मनाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं हम सभी भारतीयों के लिए गौरवान्वित विषय है कि हमारे ही एक योग को पूरी दुनिया में पहचान मिली और मात्र पहचान नहीं मिली है। 9 साल पहले जब प्रधानमंत्री ने प्रयास किए तो यूएन से एक अंतर्राष्ट्रीय इसे पहचान मिली, साथ में पूरा विश्व इसे आत्मसात कर रहा है। क्या युवा, क्या प्रौढ़, सभी से अपना रहे हैं और कहीं ना कहीं ये लोगों के जीवनचर्या का हिस्सा बन रहा है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सूरज मोहन झा जी। और बड़ा ही अच्छा सहयोग रहा ये मनोज जी कि उनको सिक्किम के पूर्व राज्यपाल वहाँ कर्तव्य पथ पर मिल गए और काफी अच्छी बातें उन्होंने कही। एक असर्शन मधु जी जो प्रधानमंत्री ने भी अपने आज के स्पीच में कहा कि जो हमारा है वो हम शेयर करते हैं। उन्होंने कहा योगा इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ फ्री ऑफ कॉपीराइट, इट हैज़ नो रॉयल्टी पेमेंट्स। तो एक असर्शन है कि जो हमारा बिलीफ है, जो इंडिया का एस्पिरेशनल विजन है, वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर, हमने कोरोना के दौर में भी देखा कि जो हमारे पास था लिमिटेड ही सही, लेकिन हमने अपने रिसोर्सेज सबके साथ शेयर किए। तो हम साथ उसमें यकीन रखते हैं और योगा उसका एक बहुत मल्टीप्लायर फोर्स है, क्योंकि योगा का अर्थ ही है जोड़ना, कनेक्ट करना, और आज वो मैसेज बहुत स्ट्रांगली गया है। जी बिल्कुल, योग सूत्र में एक मैं यहाँ पे कोट भी करना चाहूँगी, चित्त प्रसादन का कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई दुखी हो तो उसके साथ आप करुणा का भाव रखें, कोई सुखी है तो मैत्री का भाव रखें, कोई अच्छा कर्म करे तो उसे देख के खुश हो। तो हमारे देश में ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा कार्य कर रहा है तो ईर्ष्या होने लगती है, कोई अच्छा कार्य करता है तो उसे देख के खुश होते हैं। और अगर कोई गलत व्यक्ति है तो उसे समझाया जाता है, पर ऐसा नहीं है कि उसे समझाएंगे और उसके साथ बहुत क्रूएलिटी जैसा ऐसा बिहेव करेंगे और उसे एक उपेक्षा रखेंगे, एक उपेक्षा का भाव। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषाणाम भावनात् चित्त प्रसादनम, ये कॉन्सेप्ट जो है ये सामने आ रहा है। एक योग में सिर्फ आसन और प्राणायाम ही नहीं है, इसमें योग के जो मेन एसेंस है वो योग की जो विचार हैं, जो भावनाएं जो एक पर्सन इनकलकेट होती है योग करने से, वो है। जैसे कि अभी जो वीपी सिंह राज्यपाल जी ने भी कहा कि जो तनाव है वो तो एक बस एक ऐसे ही टर्म है, क्योंकि योग बिलीव नहीं करता है यू स्ट्रेस डी स्ट्रेस, जैसे मॉडर्न साइंस मानती है कि या तो पॉजिटिव स्ट्रेस होता है या नेगेटिव स्ट्रेस होता है, कि थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए तभी बच्चे अच्छा पढ़ेंगे लिखेंगे करेंगे, किसी भी चीज़ के लिए
आपके अंदर थोड़ा स्ट्रेस होना चाहिए। योग कहता है समत्वम होना चाहिए, समत्वम योग उच्यते, यानी सुख दुख लाभ हानि जय पराजय जैसी भी परिस्थिति हो उसमें समभाव बना रहे। तो अगर आप योग करते हैं तो आप ऐसी एक कंडीशन में आ जाते हैं कि आप किसी भी परिस्थिति को आपको पता है कि ये चेंज हो जाएगी, अगर कोई परेशानी भी आपको पता है कि ये चेंज हो जाएगी, हमेशा नहीं रहेगी, तो आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आती है कि आप उसे कैसे चैलेंज को फेस करें। तो ये योग सिखाता है और एक किसी भी इंडिविजुअल को हेल्प करता है कि उनकी स्पिरिट अपलिफ्ट हो अगर आप योगा का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को समझाने के लिए कि योग के कितने बेनिफिट्स हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। काफ़ी ऐतिहासिक दिन रहा। हमने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री ने यूएन हेडक्वार्टर्स में योगा सेलिब्रेशंस को लीड किया। वहाँ 180 देशों के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे जिन्होंने इस योग दिवस के इस इवेंट पर जिन्होंने भाग लिया, और जाहिर तौर पर एक रिकॉर्ड सेटिंग इवेंट भी रहा जो विच मेक्स इट अ मैटर ऑफ इमेंस प्राइड फॉर इंडिया। मनोज, इजंट इट? जी बिल्कुल। और चलते चलते अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सीआईएसएफ मुख्यालय में सीआईएसएफ जवानों ने योग अभ्यास किया। इस मौके पर सीआईएसएफ महानिदेशक शीलवर्धन सिंह ने अपने संबोधन के दौरान बल के सदस्यों को योग को जीवन शैली का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि नियमित और अनुशासित योग मनुष्य का सर्वांगीण विकास करते हैं। योग के आयाम बहुत बड़े हैं, शरीर बहुत छोटा है योग के आगे। शरीर एक साधन है जिससे कि हम अपना जीवन यापन करते हैं, एक व्हीकल है जिसके कि द्वारा हम अपना जीवन जीते हैं। शरीर स्वस्थ होना अनिवार्य है, योग शरीर को अनिवार्यतः स्वस्थ करता है, लेकिन जो योग देता है वो शरीर से बहुत बड़ा है, बहुत परे है, पूरे जीवन में व्याप्त होता है। So with a message to all our viewers, stay healthy, make yoga a way of your life, connect with yourself, connect with people, connect with nature. That's the spirit of yoga. So that having been said, we'll have to wind up the program. Thank you once again for your time. नमस्कार।